So welcome everybody to our regular Thinking Thursday. And today I really have the honor of introducing an esteemed guest speaker, Dr. Kulbhushan Bhatt. His journey actually encompasses the realms of ancient wisdom, scholarly lineage, and an unwavering pursuit of knowledge and compassion. Dr. Bhatt's childhood, I was very interested in reading about his childhood because it was blessed with the immersion in the traditions of Vedic scholarship and spirituality. Growing up surrounded by revered Vedic scholars, his early years were enriched with profound religious teachings and exposure to the wisdom of luminaries who frequented his grandfather's abode. And I was so surprised to read that his grandfather, Pandit Vishnu Dutt Sharma, was a Ayurvedic Acharya who was residing at Geeta Bhawan in Rishikesh. And of course, all of us know that we have visited Geeta Bhawan, and Nidhi here, of course, has been famous for all the stuff that is sold at Geeta Bhavan. उसको मतलब निधि ने जो है हम सबको बेचा हुआ है. So Geeta Bhavan जब मैंने पढ़ा तो I was like, wow, this is fantastic. And his uncle grandfather, Pandit Shastri, he was a distinguished astrologer from Kashi who was residing in Muzaffarnagar. So these two amazing men must have played a huge role in the life of this young boy. And I think Kulbhushan can share more about his early years a little bit. I think would be interesting for us to know that how a young boy was so enamored by these scholars. तो उन्होंने कुछ definitely बहुत सारी चीजें सिखाई होगी. और but interestingly, Dr. Bhatt has pursued BSc in agrochemicals from Delhi University. I'd like to know why he did this. But he mentioned beautifully in his introduction that transitioning from exploring the secrets of soil to the deeper exploration of the soul, this is what he did. His vision to spread this message globally led him to master French and earn a master's in tourism management from DU, followed by an MBA. Now, that was again very interesting choice of career, but I think what he's doing today is more interesting. Driven by his passion for ancient wisdom, culture, and Vastu, architectural heritage, Dr. Bhatt played a pivotal role in restoring historic forts and palaces in India, transforming them into esteemed heritage hotels. And this definitely requires my heart goes to him for this. Although astrology was an intrinsic part of his family's heritage, Dr. Bhatt sought formal education in the subjects, becoming an Acharya in Vedic astrology and Vastu Shastra under the guidance of esteemed mentors such as late Dr. Sukhdev Chaturvedi from Kashi University and Sri K.N. Rao. I've heard K.N. Rao's name. Yes, so, I mean, definitely that's fantastic teachers and mentors. His quest for wisdom led him to diverse spiritual masters, embodying his commitment to lifelong learning. As a distinguished consultant, Dr. Bhatt merges astrology with Vastu principles, offering holistic guidance to individuals from all walks of life. His expertise is showcased through widely acclaimed articles and publications in major magazines and newspapers. Moreover, he generously imparts his knowledge by teaching astrovastu and related occult subjects. In his own humble words, Dr. Bhatt identifies as a perpetual student of Vedic teachings, treading on the path of a seeker throughout his lifetime. We are privileged to have him here today to share his profound insights and experiences. So please join me in welcoming Dr. Kulbhushan Bhatt. I think we definitely need to give a clap. So thank you so much, Kulbhushan, for joining us here. And I think we're all excited to listen to this amazing journey of yours. I'd like you to spend a few minutes just to
tell us what it is as a young child to be surrounded by such amazing mentors who are your own family members. कई बार क्या होता है कि परिवार के लोग जब आपके mentors होते हैं तो we don't take them seriously. Very But true. Very true. I think you definitely took them seriously. And I think that's a wonderful experience to share. And over to you, Kulbhushan. Okay, thank you very much, ma'am. And first of all, I would like to sincerely thank you for letting me have this opportunity to be part of this group and such, pious souls around. And I would also like to thank Shivani. What happened was, as I practice astrology, and in astrology we say Pitra Dosh, and then we give a Vedic remedies for Pitra Dosha. So one day she said that she's going for a course with the Dr. Tripti Jain, and nothing less than somebody of a fame of, Raz पिछले जन्म का. तो ऐसा, अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तो कहती आज लास्ट डेट है और देख लो, बात कर लो. And fortunately, you could, allow me in that class, and I was so happy to be part of that. And then the journey didn't stop. And as I mentioned, that my quest to know more, so I went into that PLR course of yours, and then so this is on, and I'm part of this group now. I'm so happy to be part of this group. So since you asked me what has happened during my childhood times, yes, you're right. जब हमारे पास सब कुछ होता है तो शायद हम उसकी चीजों के उसका मोल नहीं जान पाते हैं. We are not able to feel that how important and how fortunate we are to be part of this surroundings. मेरे जो summer vacations थे, my summer vacation used to happen like used to spend in Rishikesh or in Muzaffarnagar. Okay, so what happens is both my grandfathers used to fight over me, saying that I will teach him things and I will teach him that. My real grandfather, who used to stay in Geeta Bhawan, used to perform Trata Kriya. So he could look at sun and then look at to a stone and break it, that kind of. He's shown me doing that. So I was surprised. And I said, मुझे भी teach करो. तो कहते हैं, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा. You'll have to practice it and all that. And then he used to take me to all the jungles to pick up those herbs and shrubs and say, इसको 3 दिन भिगोना पड़ेगा, फिर इसको कूटना पड़ेगा. So like the enthusiasm of a child, I used to do that initially, but then it becomes a monotonous. And I said, कि क्या मतलब कि यही चीज है and all that. पर जो मेरे ग्रैंडफादर मुजफ्फरनगर में थे, उनके पास क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते थे, तो जब भी कोई आएगा तो कोई मेवा ला रहा है, कोई प्रसाद ला रहा है, कोई बर्फी ला रहा है. तो मेरा चॉइस एज अ बाल बुद्धि वाज देयर टू गो देयर. तो मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट दिखाता था. मैं कहता मुझे नहीं सीखना है. आई विल ओनली go for astrology and I will learn that. So I spent quite a time with my grandfather there, and he had a Devi Siddhi, which of course I could not get. He was into all those things also. So, and he was a very renowned. आज भी उनका एक गुरुजी का मंदिर है वहाँ पे मुजफ्फरनगर में उनके नाम से. So my initial learnings were that, and that remained and with me as a quest ever coming up with that. मेरे दादाजी ने एक चीज और सिखाई थी, how the Vasudev Kutumbakam. That means everything is, like whole universe works together and we should care for everything. And he said that you should also care for Dharti Ma, the soil. And that was so much into me that I was into gardening and all that. And then I went to do BSc agrochemicals. And so on and so forth. And you read my biodata and all that. So you know that I went on doing then learning astrology formally and Vastu Shastra formally. I did my research under K.N. Rao Saab. We did a medical astrology research under. So obviously उनके साथ काम करना तो was not easy, क्योंकि बहुत सारे astrological charts पे काम करके then they arrive into some sutra. So that is what it is. But it was really fun doing it, and I really like being so fortunate to be part of all these gurus, including you, madam, because there is something different from what you don't show actually. So there's more than that. What is met the eyes when we look at you. So that is there.
ये थोड़ा सा है मेरा जो बैकग्राउंड है, और आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हाउ अ पर्सन, व्हाई वी हैव a tendency to behave the way we are. What is that instinct we have, the instinct tendencies we have. इसको मैं आई थिंक आई शेयर पीपीटी के थ्रू करता हूं मैं. आई जस्ट शेयर अ स्क्रीन. Is my screen visible to all? Yes, it's visible. Yeah, okay. So basically, if I take a question like a very simple question, what is your name, is asks. The answer immediately comes out, the name comes out. But there is a whole lot of machinery which works behind it. That means the name, what is somebody is asking, then the sense organs, the ear and eyes will work. Who is asking and what is being asked is picked up, and that data is transferred to mind. Now, mind deciphers it, and then it takes it to the memory bank, which is the chitta, and from there, it picks up the name, and the name is uttered out. It is sent to the motor nerves and then the action organ. So it's a whole lot of machinery which is working behind this simple answer, that is, this is my name. Now, having said that, the lightning speed of this action is still slower than what is the instinctive action of a person, which is governed by the prakriti of a person. And prakriti is by the ratio of all these three tattvas, the sattva, rajas, and tamas tattva. Here I would quote something from Bhagavad Gita, chapter 18, shlok 60. Swabhavajena kaunteya nibaddha swanena karmana kartum nechasya mohat karishashi vashu apitat. Lord Krishna smiles and says that Arjun, जो तुमने resolution लिया है, that won't work, because you will act as per your prakriti, and your prakriti is your swabhava. Your swabhava is your instinctive self. तुम्हारा तो क्षत्रिय धर्म, तुम्हारा रजस तत्व है. You will not wait and watch your people being killed by the enemies. So ये सब रहने दो, ये ज्ञान मत दो कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए, क्या फायदा होगा, etc., etc. In those simple terms, Krishna explained that to him. Now, when we talk about resolution will be broken, so we all are aware of this, that around us we see newer resolutions are taken and they're broken, and then the people at times feel helpless that they have changed. They were not the same what they used to be. The fire has gone down and things like that. And there is something. Sometimes people say, you have done all this. Like somebody has done a engineering, and then he goes to act in movies. Somebody has done engineering or masters in MBA and all that, and he starts writing books, etc. So what is that? So there comes the swabhava or prakriti. The science, like you see the space, astronaut says, even I don't know why. The science doesn't know it. This is our swabhava, the prakriti. So the innate tendency to react or respond to outer influences. And this leads us to somewhere. And where does it come from? If we go to the 6 darshan shastras of Vedic philosophy, we had Mimamsa given by Jaimini Rishi, Vaisheshika by Kanad, Nyaya by Gautam, Sankhya by Kapil, and Yoga by Patanjali, and Vedanta, Uttar Mimamsa by Vedvyasa. Lord Krishna in 10th chapter of Bhagavad Gita says that among the munis, I am Kapil. And among the trees, I am the Ashwath, that is banyan tree. And among the rishis, I am the Deva Muni Narad. And among the Gandharva, I am the Chitragupta. So the best is Kapil among all the munis. And why so? Because Sankhya Shastra says that it comes with the dualistic school of Indian philosophy, and it views the reality we live in as a composed of 2 principles. One is Purusha and another one is Prakriti.
So Purush is Brahman, or it is the witness consciousness. It is absolute, independent, free, beyond any perception. It is above the experiences of mind and five senses. It has all the potentialities, yet it is unfathomable by the five senses. So Purush is one force, and another force is Prakriti. Now, Prakriti is absoluteness of absolute. It is something like an awareness with a choice and a divine will who wants to manifest into many. So the manifested universe, or the matrix which manifests in the universe, is the Prakriti. And Prakriti uses three tattvas, which are the innate tendencies: sattva, rajas, and tamas. And by using them, it brings these three things together with Purusha and brings out Mahad. Mahad is the universal intelligence. And apart from Mahad, there is Buddhi, and Buddhi is individual, at a local level, individual intelligence. Now, this Mahad and Buddhi leads to Ahamkara, the sense of being, So Ahamkara, ab Ahankar kya karta hai? Ahankar is like, has to manifest as I am. So it picks up Rajas and Sattva tattva and makes five sense organs, five action organs, mind. That is the organic universe it creates. Apart from that, the five tanmatras are also created by Ahamkara. Then Ahamkar uses Rajas and Tamas to create the five elements: space, water, air, fire, and earth. So inorganic and organic universe together. So there is a connection. So when we say that the whole universe is connected, this place make me feel that I am within myself. I feel so good to be close to this river or to this ashram or that, etc., etc. It is because our memories are connected. And memories are the sanskaras, which are part of a prarabdha. So that connection comes from that inorganic universe to our organic universe. And we feel something is connected. Isn't it so? So when we talk about this, the next thing is, as we all of us will be knowing, because the part of this group people, most of them already know that we have five bodies, or koshas we say. These five elements, or these sattva, rajas, tamas, are part of all these subtle bodies as well. Right from physical body to the blissful body, Anandamaya Kosha. And it acts accordingly. Now, with these tattva, combination of these tattvas brings out six types of individuals. So if you look at it, so pitta or vata, I would say fire and air. So the fire air person or a air fire person is one. The fire air fire, the water air, fire air, water fire, and fire water. See, fire water and water fire will be different, because that tattva which is in the front is in excess. So these three tattvas, if they are balanced, they make 33% of each, which is very rare. We only find it in the very esteemed souls and the sadhakas and all that. They keep their tattvas balanced at that, but still 1% is left. And that is because the body is still there. They are within that manifested body. The moment they are off that body, then they become 100%, in totality. So mostly people are fire, air, or air fire, or water fire, or fire water. That means two major tattva, and third tattva will be very little. And everybody will run for that third tattva, which is slightest or very minimal in them. जो चीज नहीं होती उसी के पीछे भागा जाता है.
और इसके अलावा एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो तत्व फोर फ्रंट में है, जो पहला तत्व है, वो उस व्यक्ति का कहते हैं ना कि उसकी प्रकृति ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है। अब जैसे जिसका वाता यानी एयर जिसका प्रोमिनेंस में होगा पहले, that quality brings in that person a sattva quality, the quality of balance, harmony, goodness, purity, universalizing, holistic, constructive, creative. They are building. They are very positive people, luminous, and beingness, very peaceful and virtuous. And those who are with fire in the front and air or water in the back, that means the maximum ratio is a fire or a pitta. Those people are of rajas tendency, and rajas means movement, action. So they are driven by the passion. They are activity oriented. अगर कुछ नहीं हो रहा तो they feel like out of space. They are so hyper that there is nothing happening. Let's do something. Kind of thing. For them, there is neither good nor bad. If they are getting profit out of it, so the business people would have that sense. They are into a rajas. They don't see if it is wrong or right. They at times also self-centered, a little egoistic, at times individualistic, or a little dynamic also. So this is what the fire-driven guys are. And who are into tamas, that means they are having the water element in the forefront and the other elements in the back. The tamas is the quality of imbalance actually, or disorder, chaos, होता है, हो जाएगा, कैसे भी कर लेंगे, चल जाएगा. And if the pressure comes and then anxiety comes, delusion comes, a little negative about people at times, dull or inactive, at times apathy. हमें क्या मतलब है किसी से, kind of a, जब आपने सुना होगा आसपास लोगों को, हमें क्या करना है, और या इससे क्या हो जाएगा, lethargy, inertia. And at times when they are water fire, they are also violent. तो जो सांप्रदायिक होते हैं वो लोग वाटर फायर वाटर वाले होते हैं यूजुअली. तो all these tattvas are actually leading us to behave in a particular manner, and it has not directly but still have to do with our karmas. How does it happen? There is the janma after janma, birth after birth, we pick up some experiences, and they are picked up as the karmas, like the sanchit karma. So out of that, some memories are picked up and bundled into prarabdha karma. So once that prarabdha karma is done, then it is told that, okay, take a body which will act with this karma. So then the body formation happens. तो आपने सुना होगा, कहते हैं कि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बन जाते हैं शरीर. यानी पहले ही पता है कि इसको किस कर्म ने कैसे लेके चलना है, एंड देन बॉडी विल बी डाउन अकॉर्डिंगली. तो वो रेशो आपका वैसे ही दिया जाता है. एंड विद दैट द पर्सन गोज अप and behave in the manner it has been behaving. तो जिस व्यक्ति ने फैमिली प्रेशर में इंजीनियरिंग कर ली होगी, पर उसकी इन्नेट टेंडेंसी फोटोग्राफी की होगी, जैसे हमने थ्री इडियट्स में देखा था, तो ही विल पिक अप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का प्रोफेशन रादर देन बीइंग एन इंजीनियर. सो दिस इज वेयर द तत्वा विल लीड टू द पर्सन, एंड दैट इज बाय द कर्मास. तो लॉर्ड कृष्ण को जब अर्जुन ने कहा, ठीक है कृष्णा, ये तो बड़ा इजी है, अंतिम समय में जो मैं सोचूंगा वो बन जाऊंगा, तो मैं लास्ट मोमेंट में सोच लूंगा कि मैं इंद्र बनूंगा. तो कृष्णा स्माइल एंड सेड, इट इज नॉट दैट इजी. लास्ट मोमेंट में शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, अपना भी ध्यान नहीं रहता है, तो ये ध्यान भी नहीं रहेगा कि क्या बनना है. तो क्या होता है कि जो आपकी टेंडेंसी एक्यूमुलेट हुई है वो ही ध्यान में रहेगा, एंड इट विल टेक यू देयर. And this is how it is. So I think I've taken 30 minutes. I think I have 30 minutes to explain this. And now if we have question answers, we can take question answers. Apart from that, there is something, if people want to know about their tattva, we can, I'll share a link, and with that questions, if they fill in, we can
tell them what their tattva is, so that they know what their innate qualities and tendencies, and accordingly they can take themselves forward in their life. So that is how it is. Thank you very much. Okay, so we are back here, and if there is any questions anybody has, so I would, love to discuss that. I hope I'm audible to everyone, because I can't hear anyone. I have a question. Yeah, Nidhi, Kulbhushan. आपने Anji. What I want to understand, you said that कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये तीनों तत्व बैलेंस में होते हैं या उन्होंने बैलेंस कर लिए होते हैं. What are those personalities like? When you say balance, then that means tamas is also 33%. Exactly. So what are they doing with that tamas being 33% in them when it's sitting in balance? Then that doesn't interfere with their sattvic or rajasic, or doesn't. How? You see, when they मेरे दादाजी जब नब्स यानी पल्स को चेक करते थे, तो we have a vata pitta kapha, right? Yes. So this this cycle goes on. Vata will lead to pitta, pitta will lead to kapha, and kapha will again bring it back to sattva. So sattva, rajas, tamas have to move this way. The universe manifests that way. It keeps manifesting that way only. So this tattva we cannot take off. The person who do not have tamas are those who are maniac, and they are the one who do not, like psychopaths. They have the minimalistic of this tattva, because they do not have any feeling for others. अच्छा, आपने वात पित्त कफ बैलेंस में कहा था. मैं सत्व रजस तमस को बैलेंस में बना के बैठी थी, तो मुझे लगा ये सत्व रजस तमस को भी हम बैलेंस ही मानेंगे, उसमें वात पित्त कफ के साथ. Tamas is not bad. Tamas, for example, tamas is very important if you want to accumulate materialistic happiness. Yes. It cannot happen. Adani has a fire. Adani and Ambani both has a fire water. That is, they are the Rajas Tamas boys. So that's why they are able to accumulate that kind of a wealth. Right. So tamas is not bad as such. No, tattva is better. Yeah, excess of any particular tattva will create unhappiness or or imbalance. That is how it is. Right. So their sattvic qualities must be enabling their rajas and tamas to act in a way that it is more profitable overall, rather than it is just for their own good. So it's not negatively oriented within them like that. Very true. Very true. That is how it is. Yeah. Thank you so much. Okay. Yes, Minu, you have raised your hand. Please go ahead. I think somebody, Nidhi, you are a co-host. You can unmute her, or who is the co-host? Then we have Vinita Ratna, also. would you do that, please? Vinita Sridharini. Yeah, Vinita Sridharini. Minu Singh. Minu, if you want to ask a question, आप अपने आप को पहले unmute कीजिए. वो नहीं कर पा रही शायद. She wants you to permit her to. साइड में नहीं मीनू, साइड में देखो जो रेड है ना यहाँ पे नियर द म्यूट, नीचे देखिए यहाँ पे जो लाल है उसको आप पहले हटाइए. Or you put your question in the chat. Minu, put your question in the chat. Vinita, you want to ask a question? Please go ahead. Vinita, you want to ask a question? Then please go ahead. Yeah, I think I have unmuted myself. Okay, great. Okay. I don't have any question, but the subject is so interesting ना कि मुझे लग रहा है कि जितना थोड़ा सा टाइम और है, कुलभूषण जी थोड़ा सा और बताइए. थोड़ा सा और मैं
ये कहूंगा कि उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑर्गेनिक यूनिवर्स और इनऑर्गेनिक यूनिवर्स वो दोनों ही पंच तत्व से बने हुए हैं। इसका मतलब हम लोग रिलेट कर सकते हैं। यहाँ मैं जो वास्तु को प्रैक्टिस करता हूँ उसमें एक व्यक्ति के तत्वों का रेशो लेके, उसका जो घर है उसका रेशो लेके, उसकी कॉम्बिनेशन से बता सकता हूँ कि वेदर ही विल बी और शी विल बी हैप्पी इन दिस हाउस और नॉट, और वेदर दे विल बी एबल टू डू प्रोफेशनली वेल इन दिस और नॉट। अभी इसमें एक आज पता नहीं मेरे पास कितना वक्त है, पर मैं इसमें पीछे मैंने एक टॉक दिया था, उसमें मैंने एक केस स्टडी भी किया था। लखनऊ में एक वकील साहिबा थी, तो नाम नहीं लूंगा मैं क्लाइंट का, पर उन्होंने एक अच्छा सा घर लिया था और स्टार्टेड लिविंग देयर, एंड देयर हर practice flourished like anything. She picked up case after case, and then she went to went to New Delhi. She came to New Delhi to practice in the High Court. I'll put Okay, dosa. so what happened ये भी was, खा, ये भी खा. चलो. okay, so what happened was her house was profitable to her, and so she picked up her career like anything. She went on to practice in High Court in New Delhi. Now a real estate agent sells it out to a doctor, saying, डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा घर है। एक वकील साहबा यहाँ थी और छोटे केसेस लेती थी, और आज देखो वो हाई कोर्ट चली गई हैं। वास्तु से बहुत अच्छा हाउस है ये। अब ये डॉक्टर साहब भी यहाँ रहने लग गए हैं। ही वॉज अ रिनोन डॉक्टर, अच्छा प्रैक्टिस चल रही थी वगैरह वगैरह। तो फिर क्या हुआ कि somehow उनका जो प्रैक्टिस है धीरे धीरे नीचे जाने लग गया, कम हो गए, क्लाइंट्स कम हो गए, उनके पास कम लोग आने लग गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा क्या होता है, हम लॉजिकल रीजनिंग करते हैं कि अच्छा हाँ 3 क्लिनिक और भी खुल गए हैं, लोगों के पास और डॉक्टर्स भी आ गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब मेरे पास ये केस आया तो हमने ये देखा कि उन पंच तत्वों में जो इम्यूनिटी जोन है वो डिस्टर्ब्ड है। तो मैंने उनसे पूछा क्या वकील साहिबा को इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता था, या जैसे जल्दी जल्दी बीमार होना, जुकाम लंबे समय तक रहना? तो उन्होंने कहा, रियल एस्टेट एजेंट ने, यस सर ये तो था, वो हमेशा अपने पास मतलब वो रखती थी कुछ ना कुछ मेडिसिन, बिकॉज शी यूज्ड टू फील दैट, बट शी वाज वेरी गुड, उनका करियर अब पूरा था। पर डॉक्टर साहब का करियर तो इम्यूनिटी बेस्ड है, और इस घर की अगर इम्यूनिटी लो है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग तत्वा कॉम्बिनेशन, तो उसको अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो ये करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ इट एक्ट्स। तो उनका जब वो बैलेंस किया इम्यूनिटी जोन को, तब इनका जो करियर है इट स्टार्टेड पिकिंग अप। So this is how it works. So one has to get into it. Yeah, go ahead. So you like personally visit and see the houses, or you like take the हाँ जी, maps, personally visit it? मैप करने के बाद पर्सनली असेसमेंट किया जाता है। उसके Okay. बियॉन्ड पर्सनल करने से यू आल्सो सिंक इन विद द एनर्जीज ऑफ द प्लेस। Yeah. वी ऑल आर, आप सभी तो चार्ज्ड लोग हैं, तो पता लग जाता है कहाँ की एनर्जीज कैसी हैं। तो दैट वे, इजंट इट? Okay, Beautiful. so Thank you. thanks, Meenu. Something new. Oh, This Priya is ji, something a namaskar. very new concept for us. Yeah. Okay, अच्छा, so okay. Kulbhushan, there is a question on the chat. जी विनीता जी जी पूछ रही है कि जी एक व्यक्ति जो है वो he is basically सात्विक, more सात्विक, but if he is surrounded by people who are तामसिक, तो कैसे वो व्यक्ति अपना जीवन कैसे गुजर करेगा? देखिए, अब ये डिपेंड करता है। जैसे आज हम यहाँ पे, मैं आज जहाँ बैठ के ये टॉक दे रहा हूँ जूम पे, मैं दूसरे कमरे में नॉर्मली करता हूँ, पर वो वाला कमरा जो है गार्डन की तरफ ओपन होता है, और आज वो गार्डन किसी ने अपनी शादी के लिए बुक किया हुआ है। वहाँ धूम धड़ाका डीजे चल रहा है, तो आई हैव टू शिफ्ट ऑल माय स्टफ हियर इन दिस रूम एंड सिट हियर टू डू इट। तो क्या करना पड़ता है, या तो बाहर के इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होने देना पड़ता है, या अपने अंदर के इन्फ्लुएंस को बाहर को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। सो इफ यू आर मोर सात्विक एंड ओनली कंसंट्रेट ऑन योर सत्वा, you will certainly make them realize and back up from their tamas attitude towards you. ये बड़ा सिंपल सा, अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल
बहुत ही ग्रॉस लेवल पे बोलूं कि जैसे एक वेजिटेरियन व्यक्ति है और उसके पास रहने वाले नॉन वेज खाते हैं, तो वो केवल वेज खाएगा, अपना अपना मेडिटेट करेगा, सत्व में रहेगा, तो धीरे धीरे उसके आसपास वाले नॉन वेजिटेरियन सोचेंगे नहीं यार, ही माइट गेट डिस्टर्ब, चलो बाहर ही खा लेते हैं, यहाँ नहीं खाते, सो दैट थॉट स्टार्ट्स टू हैपन। सो डोंट वरी, इट इज ओनली यू हु विल चेंज इट। वो जो फ्री विल दिए ना ईश्वर ने, वो इसीलिए दिया हुआ है। सो दैट इज हाउ इट इज, isn't it? वेरी I नाइस। have one question. हाँ, बोलिए। जी Um, Namaskaram, नमस्कार। दीदी. Namaskaram, everyone. जी जी कुलभूषण, नमस्कार भैया जी। सबसे पहली बात तो आप मेरे गुरु भाई हो गए, क्योंकि एसएन राव जी के साथ में उनके केन राव, अंडर मैंने भी पढ़ाई करी। ओ वाह, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कपूर, के एन राव, राव सर के साथ में, एंड एसएन कपूर, चीफ जस्टिस एसएन कपूर, गौर सर, ये सब मेरे। अच्छा, कैप्टन गौर, कैप्टन गौर, हाँ, यस अब तो यस, लेट कैप्टन गौर हैं, देयर इज नो मोर नाउ। I know Rastogi sir, they all are my teachers, my ओके masters. So ओके। उस हिसाब से आप मेरे गुरु भाई हो गए. And another question, आपने अभी पितरों की बात करी, पितरों की हमने बात अभी कर रहे थे, आपने शुरुआत में बात करी. तो आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पितृ दोष और पितृ ऋण? देखिए, मैं चाहूंगा कि ये डॉक्टर तृप्ति जैन मुझे अलाउ करेंगे तो ही बोलूंगा, नहीं तो ये उनका फुटे है, वो बहुत ही, बल्कि मैं तो सोचूंगा कि नहीं जो नहीं, मैं प्रैक्टिस कर। भूषण, प्लीज हाँ जी, प्लीज आंसर, प्लीज ओके। सी, दोष इज लाइक व्हेन somebody इज अनहैप्पी, आपको ये मानना पड़ेगा, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप हम्म और आपका जो स्पाउस है, हम्म उसको पता ही नहीं चलता कि आप कब रूस गए हो या रूठ गए हो, हम्म उसको मनाना नहीं आता है, उसको पता नहीं है, तो आप भी सोचते हो कि यार इसके समझ में नहीं आएगा, उसको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, इंस्टेड ऑफ शोइंग साइंस एंड सिंबल्स, उसकी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब हम ये मान्यता है कि हमारी जो लीनेज है, बिकॉज द डीएनए इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एजेस, राइट, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और डीएनए क्या है, बेसिकली वो संस्कार हैं, वो मेमोरीज हैं, फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी एंड सो फोर्थ, सो ये कनेक्टेड, तो हम इसे कहते हैं कनेक्टेड डेस्टिनी। वो लोग उसी परिवार में आएंगे, उन्हीं के साथ जुड़ेंगे, और इसमें जो मेन सोर्स है जहाँ डिस्टरबेंस फील कर रहा है, वो उसी व्यक्ति को परिवार में पकड़ता है, जो समझदार होता है, कि समझ सकता है कि ये रूठा हुआ है, बाकियों को समझ में नहीं आ रहा, उन्हें पता ही नहीं है, तो वो जो पितृ दोष का डिस्टरबेंस उसकी उसके जीवन में दिखना शुरू हो जाता है। अब फिर वो किसी ना किसी पंडित को पूछेगा, किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछेगा और उसके साथ करेगा। इसके अलावा क्या है कि पत्रियों में पितृ ऋण भी होता है। अब ये क्या होता है कि ये जो मैंने पढ़ा है, जो मान्यता ये है कि जैसे आपके पितरों में किसी की अनबुझी इच्छा रह गई थी, वो नहीं पूरी कर पाए, तो डाउन द लाइन वो चाहते हैं कि जो जिसने मेरा बैटन लेके आगे मैराथन दौड़ रहा है, वो उसको कर ले, कि भाई मैं इतनी स्पीड में दौड़ा तो वो और तेज दौड़ सके। तो वो जो ऋण है उसके रूप में उसके पत्री में आएगा। मैंने जैसे पहले बताया अपने टॉक में, पहले लिखती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। तो वो तकदीर में पहले से आया होगा कि ये ऋण लेके जाएगा, इसके वो स्त्री ऋण होगा, पितृ ऋण होगा, क्रूरता का ऋण होगा, बालिका ऋण होगा, इस तरह के ऋण होंगे उसके ऊपर, तो उसका वो परिहार करेगा, तो उसका जीवन फिर ठीक रहेगा। दैट इज हाउ इट इज, दिस इज व्हाट वी प्रैक्टिस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि सम टाइम हमारे ऊपर ये भी होता है कि कर्स भी होते हैं, जी जी दोष और ऋण के अलावा कर्स भी होते हैं। तो क्या जी, इनकी जो रेमेडीज हैं, हम चाहेंगे, मैं तृप्ति मैम से दी से चाहूंगी कि हाँ इसके ऊपर एक पूरा बिल्कुल। डॉक्टर तृप्ति जैन क्योंकि इज बहुत एक्सपर्ट इन सारे दिस लोगों फील्ड ने एक्चुअली। इतने सारे वो फैला रखे हैं, भ्रम फैला रखे हैं, जिसकी जी बेचारे लोग बहुत लुटते पिटते हैं। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अगर वो देंगे, क्या इससे आपके वास्तु दोष, क्योंकि वास्तु जो है इस पे भी आपका पता चलता है कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। जी
जी वास्तु जी वास्तु भी आपको बताता है कि ये पितृ जी दोष वाला घर है कि नहीं है। जी जी तो इसकी जो रेमेडीज हैं, क्या इसकी रेमेडीज एक जैसी होंगी या इसमें कुछ डिफर होगा? क्योंकि आपने रेमेडीज की बात करी शुरू में ही, जी जी तो इसके ऊपर रेमेडीज का जी और जी थोड़ा सा जी छोटा सा क्रिस्प सा एक Okay, anything and everything in this universe हम्म happens within time, matter, and space. Okay, so time हम्म is your timeline. आपकी जो टाइमलाइन है वो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है. हम्म मैटर जो है वो ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल अराउंड यू. ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग, people can be anybody, relatives, spouses, whatever, friends, foes, हम्म whosoever. हम्म And third is space. Space is your vastu, where you हम्म reside, जहां पे जाके आप हम्म काम कर रहे हैं या जहां आप रह रहे हैं. हम्म कर्मा जो है वो ट्रेवल करता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेन ग्रिड में से ट्रेवल करती है हाई टेंशन वायर से, फिर वो ट्रांसफार्मर में आएगी, ट्रांसफार्मर से आपके मीटर में आएगी, मीटर से आपके घर में आएगी, फिर आप जो ये स्विच ऑन करके लाइट जला रहे हैं वहां तक वो जो कर्मा पहुंच रहा है उसने एक एक तंत्र को पकड़ा है, तो वो हम्म ताना बाना के थ्रू आता है, उस तंत्र के थ्रू आता है. हम्म सो हम्म दैट मैनिफेस्टेड कर्मा, जो परेशानी हो रही है, जो पितृ ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में, श्राप के रूप में आ रहा है, ये हम्म एक कर्मा है जिसने एक तंत्र पकड़ा हुआ है. तो जब आप हम्म टाइम, मैटर और स्पेस के साथ काम करते हैं तो आप या तो मैटर को चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो इन तीनों को पकड़ के ही आता है. आपने आप करेक्ट अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखिए, एक पर्टिकुलर समय में कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग ही आसपास थे. एक पर्टिकुलर ड्रेस मेरी बड़ी अच्छी थी, या पर्टिकुलर कार मेरी बड़ी अच्छी थी, या पेन, व्हाटएवर, तो वो आपके साथ जुड़ा हुआ था उस कर्म को मैनिफेस्ट करने के लिए. और जैसे ही वो चेंज हुआ, आपने कुछ चेंज किया तो कर्मा चेंज हो गए. वो सटनली होता है, वो 9 से 18 महीने में दिखता है, तो याद भी नहीं रहता है कि हमने क्या चेंज किया है. यस ठीक है, तो ये ही अगर मुझे ये लाइट परेशान कर रही है, मेरे फेस पे पड़ रही है और मुझे सोना है, तो ये कर्मा है जो मुझे मैंने परेशान करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे तो स्विच ऑफ कर दूंगा या बल्ब उतार दूंगा. हाँ करेक्ट तो ऐसे ही अगर चित्रगुप्त ने कुछ लिख के भेज दिया, जिसने मैनिफेस्ट होना है, उसने टाइप वहां किया, उसने वाईफाई वहां से पकड़ा, वो प्रिंटर में यहाँ प्रिंट हो रहा है, मेरी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है, या तो मैं प्रिंटर ऑफ करूंगा या मैं वाईफाई ऑफ कर दूंगा, क्योंकि प्रिंट कमांड चलेगी 50 पन्ने गलत प्रिंट हो जाएंगे, तो प्रिंट जल्दी से जाके प्रिंटर को बंद कर दो. बिल्कुल ठीक है, और उसमें से डिलीट जाके बाद में मारो. तो ये तरीके से हम उसका परिहार कर सकते हैं. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच हाउ वाज दिस एप्लीकेबल इन प्रैक्टिकल लाइफ? ये तो आपने प्रिंटर की बात कर दी. अब समझ प्रैक्टिकली आप मुझे प्रैक्टिकल सिचुएशन लाइफ आप में मुझे कैसे सिचुएशन उतारे? नहीं नहीं आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से बता देता हूँ मैं. अभी तो मैंने एनालॉजी दी है इस पे. आप बताइए क्या, जैसे क्या पूछना चाह रहे हैं. नहीं, जैसे But अगर जैसे मीनू, जो हाँ जी. कुलभूषण जी ने कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो बल्ब कौन है आपकी लाइफ में, वो आप डिसाइड करो. Who do you want to switch off, right? You will have to decide who is the bulb. और अगर वो बल्ब 40 वॉट्स का है, 60 वॉट्स का है, 100 वॉट्स का है, उसके हिसाब से तुम्हारी एफर्ट होगी, राइट? करेक्ट I think what Kulbhushan has given a beautiful example. बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है, समझ. यस जी मीनू जी, मैं इसी को एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ जो मैंने केस स्टडी बताई है. जब डॉक्टर साहब ने कहा जी मेरा नहीं चल रहा है धंधा बिल्कुल भी, और उन्होंने अपना दिखाया है कि वो FRCS लंदन और ये सब कर करा के और इतना उनका अच्छा चल रहा था, तो मैंने पूछा कि आपने लास्ट कुछ खरीदा है क्या, कोई प्लॉट खरीदा है, कोई घर खरीदा है, क्योंकि क्या होता है, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि कोई स्पेस तो नहीं कनेक्ट किया है ना अपने साथ, फिर कोई मटेरियल तो नहीं लिया है, मतलब कोई नई गाड़ी खरीदी है, कोई नया फर्नीचर किया है. ये मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन से मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा मैटर इनके आसपास आया, कोई नए लोग जुड़े हैं, कोई नया स्टाफ रखा है, ये पूछना शुरू करता हूँ. फिर उनके जन्म पत्री देखता हूँ, तो ये तीनों चीजों में जब जाऊंगा तो उससे आइडिया लग गया. तो जब उन्होंने कहा ये नए घर में हम शिफ्ट हुए हैं, कितना साल हो गया जी 2 साल. और 2 साल पहले लिया, वो तो पुराना हो गया. मैं कोई बात नहीं, दिखाएं. फिर जब हमने उसको ग्रिड किया घर को, तो उसमें इम्यूनिटी जोन थी, कम थी. अब डॉक्टर का करियर डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी, तो जब वो कम है तो करियर कम हो जाएगा. तो उसको उसको स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया. तो स्ट्रेंथन किया तो 3 से 6 महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो गया उन्हें. तो उनको लगा ये तो जादू हो रहा है.
कि अब लोग या तो ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं इसलिए मेरे पास आ रहे हैं, या आपने कुछ किया तो कुछ हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब जैसे डॉक्टर तृप्ति ने जैसे बोला कि अगर आपको पता लग जाए बल्ब कौन सा परेशान कर रहा है और उसे कौन से स्विच से बंद करना है, तो वो जाके स्टॉप कर देना है। Isn't it? ये है जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, Very nice. थैंक यू सो So मच। that means हमें अपने घर में सामान लाने से पहले बहुत सोचना चाहिए, नहीं? मतलब हम एनर्जी लेकर आ रहे हैं तरह तरह की। Exactly. You're right. And पर if पता somebody क्या, gives us a gift and then we're not, how do we look at that then? हाँ, फॉर सब चीजें तो मैटर करती हैं। पर मैं ये Exactly. कहना चाहूंगा कि मैं आई कम बैक टू द सेम थिंग अगेन, कि जो आपके प्रारब्ध में है वही गिफ्ट आदमी पैक करवाएगा आपके लिए। ही इज नॉट डूइंग इट ऑन हिज ओन। मतलब आपने उस स्वर विज्ञान में देखा था, उसमें यही है, उसका जो स्वर चल रहा होगा वो जिस तत्व में, क्योंकि जब स्वर चलता है तो उसमें 5 तत्व चलते हैं, तो जिस Correct. तत्व का स्वर चल रहा है उस तत्व का सामान लेके आपको दे देगा। और आपके प्रारब्ध में उस तत्व से अगर परेशानी है तो आपको परेशान होना पड़ेगा, और अगर आपके उस तत्व से उन्नति है तो आपको लगेगा यार ये तो इतना अच्छा गिफ्ट है, जब से ये गणेश जी यहाँ रखे हैं तब से ठीक हो गया। अब मैं आपको ट्रैवल एजेंसी का नाम नहीं बताता हूँ, एक ट्रैवल एजेंसी है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, उनका ऑफिस देखना था। तो जैसे ही मैं घुसा तो गणेश जी रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि गणेश जी वार्ड ऑफ ऑल द फोर्स एंड बाधाओं को, विघ्नों को हटा देते हैं, तो इसलिए बैठाया। मैं कहा गणेश जी को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि उस ग्रिड के हिसाब से गणपति जी ऐसी जगह में बैठाए थे जो उस जगह का डिस्पोजल जोन था। जब डिस्पोजल में आपके मतलब वो उनको बैठाया जिनसे लीड करना है, जिससे सब कुछ शुरू होता है, तो आपका धंधा कम होना शुरू हो जाएगा, नए चीजें आनी बंद हो जाएंगी, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट टू कनेक्ट विद directions and all So all objects are pre-planned for us. All people are pre-planned who will give what to us and when. My God. that. Yeah. मुझे लगता है कुलभूषण आपको एक क्लास ना रेमेडीज पे भी लेनी चाहिए। ये Yeah. अनदर थिंग मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। ये मैंने जी। कुछ समय पहले ही मैंने शुरू करा कि जब मैं कोई चीज लेती हूँ या कोई गिफ्ट देता है मुझे, तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड उस पर्सन को जिसने मुझे दिया है। जी। दूसरा चीज, मैं उस जो पर्टिकुलर चीज, मतलब जैसे मेरा पेन मैंने खरीदा है अगर, तो मैं इस पेन को जब 4-5 पेन रखे हैं तो मैं देखती हूँ कि किस पेन से मेरा कनेक्शन आ रहा है, और उस जी। पेन के साथ में कि ये पेन जो है ना, ये बहुत ही मजे वाले काम करेगा, मैं बहुत अच्छा लिखूंगी इससे, और जी। ये मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने जी। मेरे बेटे ने मेरे को एक सूटकेस दिया। जिस दिन जी। से वो सूटकेस मेरे पास में आया है, तो मेरे ख्याल से मैं इतनी ट्रैवलिंग कर रही हूँ, और सब ट्रैवलिंग जो है वो ज्ञान से रिलेटेड है। वेरी नाइस। जब दिया तो मैंने ये बात खोलने से भी पहले मैंने उसके ऊपर हाथ रखे अपने, एंड आई गिव दिस इंटेंशंस कि ये जो सूटकेस है ना, ये मुझे बहुत ज्ञानवर्धक ट्रैवलिंग्स देगा, जिससे मेरा अपना ग्रोथ होगी, मेरी अपनी ग्रोथ होगी। और यू वोंट बिलीव, जब से वो सूटकेस आया है, वो शायद ही कभी ऊपर टांग पे रखा गया हो। प्रिया जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बिल्कुल। सो दिस इज हाउ इट इज, ऑल मैटर गेट कनेक्टेड, दे ऑल यस, मैटर। सहजता, सुंदरता और सरलता, जी। उसके साथ में अगर आपने किसी चीज को अपने मन से, अपनी आत्मा से जोड़ दिया, उतनी जी। प्योरिटी से, जी। तो ये मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, तो जी। वो उतना ही सुंदर कार्य करता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इतना भी कुछ भी हो, वो वैसे ही कार्य करेगा। जी। जी। तो लेकिन बहुत मजा आया आपसे, तो आज ये इतना सारा मुझे मिल गया ज्ञान। नहीं, मुझे थैंक यू। मुझे मेरा मेरा धन्यवाद है तृप्ति मैम को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बोलूं। दीदी, तो मैं और तो मैंने तो, मेरे पास आप सभी ज्ञानी हैं यहाँ पे, तो मैं तो केवल शेयर कर रहा हूँ अपने थॉट्स, तो दैट्स इट, नॉट बियॉन्ड दैट, सो दिस इज हाउ इट इज। It is. Yes, So, Nidhi, any any other question? question? Ma'am, Yeah. can I please ask another question? Yeah, Nidhi, go ahead. So when we're talking about tattva elements, I noticed at a point in time जब सारे के सारे electronic gadgets one by one खराब होने शुरू हो गए थे, and that is when my switchover happened from my corporate career towards spirituality. एक दिन में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी में तो पता नहीं हर रंग के कलर्स आ गए थे,
telephones, mobile phones, सब खराब within a span of 1 week. So when would that also, can we explain it like this? Come again, I didn't get you. The beach mein there is a sound which went off. I'm saying that there was a time when I'm able to hindsight connect it now. There was एक हफ्ता ऐसा था जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो गए. वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन्स, abrupt ending of अब्रप्टली मतलब कुछ तो malfunction होने लग गया. It will also had an abrupt ending कि भाई इसको छोड़ देते हैं, कुछ नया करते हैं. You had an abrupt ending in the career then? Yes, I did. Exactly. So Abrupt, that is very abrupt. Yeah, so that is how that karma has And manifested. there was an upheaval happening within. So I was able to see everything. I don't know. It was interesting actually. उस समय तो लग रहा था कि जब देखो इलेक्ट्रिशियन को ही फोन करे जा रहे. It's very interesting to note that all this was happening at that time. So that was how to understand that तत्वों के point से या फिर was that वास्तु or was that what? ये मैं जो क्लासेस लेता हूँ उसमें मैं ये पढ़ाता हूँ कि कैसे, जैसे अभी एक इसमें मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, एक आंसर देता हूँ. जैसे एक व्यक्ति है, उसका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, उसका खर्चा है करीब 50 लाख पर मंथ का, और वो केवल 68 लाख बना रहे हैं. तो हमने कहा कि भाई हम ये करेंगे आपका, दिस इज व्हाट एवर यू नो, लाइक कमर्शियल डील होने के बाद हमने कहा ठीक है, वी स्टार्ट टू वर्क विद. अब क्या होता है कि अगर आप लॉजिकली देखें तो आपने मार्केटिंग में 2 व्यक्ति रखे हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग में 2 व्यक्ति रखे हैं, आपने एक मार्केटिंग जो है एवेन्यू आपका वो है जो कॉर्पोरेट को देखेगा, एक जो है वो फॉरेनर्स को देखेगा, एक वो है जो पार्टीज को देखेगा. अब आप ये देखिए, वो लॉजिकली एमबीए के तहत, बिजनेस मैनेजमेंट के तहत ये देखा जाता है कि दीज आर द डिफरेंट वर्टिकल्स वी विल लुकिंग एट, राइट. पर मैं उन्हें आपके प्लैनेट से कनेक्ट करता हूं. तो जो प्लैनेट आपका वीक होगा, उधर वाले लोग काम नहीं कर पा रहे होंगे, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा होगा आपके लिए. आप कहते हैं यार इतने मोटे मोटी सैलरी मैंने रखा है और ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको यहां से टाइट करेंगे तो वो वहां से अपने आप टाइट हो जाते हैं. आपके केस में जैसे ये खराब होना शुरू हुआ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी उस समय मनी कहां से आ रहा था, करियर से आ रहा था. तो बार बार रुक रहा है, तो करियर में अब्रप्ट एंडिंग आना शुरू हो जाता है. देयर इज अ डिस्ट्रप्शन हैपनिंग. ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि केवल करियर पे करेगा लागू. मैंने अभी आपको बोला बिकॉज आई रेड समथिंग बिटवीन योर सेंटेंसेस व्हिच इज आल्सो समथिंग. जब हम कोई शब्द बोलते हैं, वो शब्द में भी तत्व होते हैं. ये बड़ा सटल साइंस है. तो उस तत्वों से हम रीड करते हैं. तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ, इसमें मैं व्यक्ति को पूछता हूँ आप अपनी कहानी बताइए कि क्या हुआ, कब क्या हुआ, क्या हुआ. वो सोचते हैं शायद मैं कहानी सुनने में इच्छुक रहता हूँ, आई एम अ पेशेंट लिसनर, पर वो मैं उनके सेंटेंसेस के बीच में से वो तत्वों को पकड़ता हूँ. तो फिर याद आता है कि हाँ, फिर समझ में आता है कि इनका ये वाला जोन जो है ये वीक हो गया है, ये वाला जोन है जैसे ये हो गया है. क्योंकि जब मैं उनके घर गया था, डॉक्टर के घर, में फिर उसी केस स्टडी पे आ रहा हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि जो पहले रहते थे क्या वो बीमार रहते थे, क्या वो डॉक्टर थे. कहते नहीं, डॉक्टर नहीं थे, वो वकील थे, और उनका तो करियर बहुत अच्छा गया, ये गया, वो बोलने लग गया, रियल एस्टेट एजेंट तो बोलेगा ऐसी. मैं कहा पर वो क्या बीमार रहते थे. तो कहा हाँ ये तो था, वो हमेशा 7 दिन की जगह 17 दिन बीमार हो जाएंगे और कुछ ना कुछ चलता रहेगा उनका ऐसे. तो तब मैं कनेक्ट कर पाया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यही है. तो आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंस, एवरीथिंग इन आवर लाइफ हैज a message to tell us. We need to pick it up. That's it. That is how it is. I'll be in touch. Is it? Yes. Yes, Ms. Gaur. Yes, please. थैंक यू सो मच कुलभूषण जी. सो मैंने आपकी ज्यादा अटेंड नहीं की, बट शायद मुझे यही पार्ट अटेंड करना था. इट्स अबाउट एक्चुअली माय सन. तो मैं अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग चलना शुरू हुआ कि अभी तो वो अच्छी जगह पढ़ रहा है. तो जब वो हमारे घर पे था, व्हेन ही वाज लाइक 15-16, तो कुछ ऐसा हुआ कि हमने इसको जिस रूम में शिफ्ट किया, उसके रूम के जो बगल में ही स्टोर रूम था. ठीक है. तो ड्यूरिंग दैट कोविड पीरियड इट वाज अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम फॉर हिम, अप्स एंड डाउन्स, इमोशन एंड ऑल. उसके बाद उसका सिलेक्शन अच्छी जगह हो गया. फिर वी वेंट टू लिव फॉर सम टाइम विद आवर इन लॉज प्लेस. तो उसके लिए रूम दिया गया
तो वो भी एक ऐसा रूम था जो अनयूज था, बट थोड़ा सा स्टोर रूम जैसा यूज होता था, वहां पे वो पढ़ता था, 3-4 महीने वहां स्पेंड किए। फिर वो अपने हॉस्टल गया इन अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, वहां पे उसकी अनबन रही थोड़ा, उसके ना रूममेट के साथ हुई नहीं, बिकॉज दैट अदर पर्सन वाज वेरी ओवरपावरिंग, तो उसको एक सिंगल रूम में शिफ्ट किया गया। वो जो सिंगल रूम में शिफ्ट हुआ वो उस हॉस्टल का स्टोर रूम था। तो वो अभी स्टोर रूम में मतलब मैं अभी दिमाग चल रहा है, मैंने कहा वो 3-4 जगह से शिफ्ट की, वो स्टोर रूम टाइप ऑफ थी, भले ही वो हॉस्टल का हो या घर के। तो इज एंड ही इज फेसिंग अ मच प्रॉब्लम, लाइक ना वेरी कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इज नॉट एबल टू फाइंड हिज पर्पस ऑफ लाइफ, इन वेरी 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 डिसमल एंड मिजरेबल स्टेट। तो does it, I'm sure it has some connection with it, or like, or मतलब anything further need to be investigated, like though he's Yeah, sorry, go ahead, you said something. मतलब बाहर से देखो तो he's studying in the one of the best of the colleges, but अंदर से he's so purposeless, and वो feel करता है कि where am I moving to, that materialism is not satisfying him at all, he has never been, but कुछ भी एक ना राह नहीं पकड़ पा रहा है वो, and he's in a, तो मुझे अभी सोच रही थी मैं कि क्या वो 3-4 जगह जो है उसकी स्टोर रूम काइंड ऑफ रही है ड्यू टू एनी सिचुएशन, तो नहीं, इट उन्हें कुड पता बी क्या समझ में आ रहा होगा, if he shares his heart to you, वो उनको ये लगता है कि मैंने इतना कुछ कर लिया, पर इट्स ऑफ नो यूज, और ट्रू मैं ट्रू। जो कर रहा हूँ क्या ये इसका कुछ यूज हो पाएगा कि नहीं, या ऐसे ही सोचते हैं। यस यस अब यस। अभी जो ये चीज जो मैंने पकड़ी है, आप ही के सेंटेंसेस में से पकड़ी है। आप एक जी जी पर्टिकुलर तत्व के साथ बात कर रही हैं, और वो तत्व आपका बेटा क्या सोच रहा है वो बता रहा है। तो ये चीजें की जा सकती हैं, लाइक यू कैन सी ओके। दैट, एंड यू ऑलरेडी सेड इट ऑन योर ओन, लाइक। और हमें क्या होता है कि जो हमारी डेस्टिनी है, इसको कहते हैं, जैसे हमारे पास एक फाइल आती है ना, जिफ फाइल कहते हैं, वो बार बार रिपीट करता है एक्शन। तो हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों होता है ये ऐसा, एक व्यक्ति कहता है बार बार मैं ही क्यों धोखा खाता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं सबका भला करता हूँ मेरा भला नहीं होता। तो इसका एग्जैक्टली। मतलब वी हैव एंटर्ड इनटू अ जिफ। अब वो कार्मिक जिफ जो है घूमती रहती है, तो उसको जब तक ब्रेक नहीं करेंगे, सो यू नॉट बी आउट जी ऑफ इट। तो इस तरह का जी चीजें ये है, जी। बट यू राइट, दिस इज Yes, देयर। because I do understand every point of, prarabdha karma, sanchit karma, but then still, then what? Something needs to be done ahead, because वो भी बच्चा है, वो इतना नहीं समझ पाता, but yes, if there is anything, I would like to connect with you, sir. Definitely. एब्सोल्युटली, Because यू मोस्ट वेलकम टू डू दैट। और जैसे मैम कहती हैं, वो पीएलआर जैसे ही कराती हैं, तो आपकी वो जो मनोग्रंथियां पूर्व जन्म की भी होंगी, या इसमें भी एज रिग्रेशन होता है, तो वहां से जी अगर जी खोल दी जाती हैं और वो चीजें ठीक हो जाती हैं, तो हाँ ये ना एक तरीका है sir, हाँ डॉक्टर yes, जी। but I think you will understand he is not in a state कि वो कुछ ऐसी थेरेपी में जाए, because he is feeling very helpless जी, kind of, and not trusting नहीं ठीक anything. है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये होता है कोई नहीं, इट इज देयर। आप एक काम कीजिएगा, उनका सामान पड़ा है घर में, तो अगर हाँ उनका हाँ कोई भी सामान, उनका जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, अपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की जगह पे जहां पे भी रखा होगा उसको हटा दीजिएगा वहां से, और ईस्ट साइड पे ले जाइएगा। ईस्ट में, ओके, ठीक है। ठीक है, ये कर दीजिएगा, तो थोड़ा ओके। सा उनको, ही विल स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा, वो रिसीव फिर करना शुरू करेंगे। अभी वो रिसीव भी नहीं करना चाह रहे कुछ, ही इज नॉट हाँ इनटू रिसेप्टिव मोड। यस, हाँ, ही वाज अ वेरी स्पिरिचुअल एंड भगवान में मानने वाला, वो उसका भगवान की तरफ से भी हो रहा है, तो विश्वास उठ गया होगा। दैट इज मोर स्कैरी फॉर मी, बिकॉज क्योंकि हाँ, कहीं तो आस्था होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल तो सही या है, वो हो जाएगा, जी आप ये करा दीजिएगा, वो ही विल जी स्टार्ट, क्योंकि जैसे ही मैटर स्पेस पे दूसरी जगह शिफ्ट करेगा, वो अपने आप दूसरी तरफ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। That was awesome, Kulbhushan. Anybody else? Question पूछना है आपको? Well, I think we can give Kulbhushan a part of our heart. We should have one more session, ma'am, with Kulbhushan ji. Yes, of course. ये तो starting है. Yeah. अब हम साथ हैं तो When the बिल्कुल। air will start रेमेडी moving. लेके आएंगे। अभी जो इनका जो तत्व है ना, आज जो है, that possibly is earth based because he has finished quickly, he's asking for questions, so वायु तत्व भी start होगा इनका। He has already agitated वायु us. तो आज जो है ना, पृथ्वी तत्व है, all of us listening, steady,
स्टेबल, सोच रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे कुलभूषण को हम एक्टिवेट करना स्टार्ट करेंगे। जी जी देयर विल बी वायु तत्व, है ना कुलभूषण? जी मैम, जैसे भी आप कहें। लास्ट में होगा अग्नि। हाँ I will tell him कि next subject what is he going to plan. हाँ, उसी नहीं से आप पता बताइएगा, मैं चलेगा कर कि दूंगा। उसी से पता चलेगा कि which actually tattva is active when Kulbhushan comes to talk about the subject. All right. Or I think what Kulbhushan beautifully has explained, the art of the science of actually resonance, है ना? Today Yes. जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, we are thinking about what he has said, उसको हम अभी digest करेंगे, फिर growth होने वाली है. So Yes. I think slowly and steadily, कुलभूषण को मैंने पहले ही कहा था, ये तो शुरुआत है, अभी तुम्हारे इतने सारे साइंसेस सीखे हुए हैं, तो हमें कब फायदा होगा? नहीं जरूर, मैं I'll be coming back. जब आप subject, कुलभूषण, हाँ जी, let us know हाँ the जी subject, and then we'll give you a date and a time. And मैम, अगर आप चाहेंगे तो मैं तत्वों में जैसे मकान को कैसे या ऑफिस को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, कि आप किस तत्व के हैं तो आपका प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, किसमें आप यू विल फील दैट एट ईज। कई होता है कि सुबह ऑफिस जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और कई होता है कि यार रात हो गई, अभी कल सुबह कब होगी, कल फिर से काम करना शुरू करना है। तो आप कहाँ प्लेस्ड हैं, तो आपका तत्व क्या सिंक में है आपके वर्क प्लेस के साथ, या तो इसको ले सकते हैं या कुछ एस्ट्रोलॉजी पे ले सकते हैं। मतलब आप जैसा आज्ञा देंगे वैसे ही कर लेंगे, कोई I think तत्व का जो आपने स्टार्ट किया है कुलभूषण, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट्स अ वाइड साइंस. आई रेकमेंड कि तुम 15-20 मिनट इसके बारे में बोलो नेक्स्ट टाइम. ठीक है और मैम। मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के की जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी याचना ने डिस्कस किया है, वो जी पहले से आपके साथ कनेक्ट हो, जी आप उनके साथ जो भी इश्यू है वो आप देखो, है ना. जी जी And then you can discuss it. You don't have to take the name of the person. जी तो उससे क्या होगा कि we will understand कि what was the process. जी आपने जी किस तरह से पहले हिस्ट्री ली, फिर जी आपने हिस्ट्री में से क्या क्या लोकेट किया, जी फिर आपने किस तरह से उसको, मतलब whatever remedy you have suggested. So this way, if you present a case study, I think Okay. it will be good, because we will understand how you have gone step by step. Fair enough. What do I you all can do think? that. Would it be a good idea? Yes, ma'am. To do Yes, something ma'am, like definitely. that? So कोई भी Because then एक it या becomes दो, relatable. two people can connect to Kulbhushan. We will let you know. And or maybe आज जो जितने लोग मौजूद है, इन्हीं में से दो लोग कुलभूषण के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. Nidhi has raised her hand. Now there's so many hands we can't take. Two hands. मैम मैंने हैंड रेज नहीं करा, आप मना कर देती. चलो याचना I think needs help. I know that. Okay. So I All think right. Yachna would Ma'am, be I also need help, ma'am. Meenu also needs help. Nidhi, Okay. you actually need मैम help. मैम मैं दिल्ली की हूँ, तो दिल्ली में मैं कनेक्ट होना चाहूंगी. ठीक है, वो आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ. मैं जी टॉक की बात कर रही हूँ. In the जी talk, Kulbhushan can discuss two cases. Okay, Meenu and Yachna. Nidhi, you can definitely talk to Kulbhushan. But Meenu and Yachna के cases हम ले सकते हैं Kulbhushan. It will be good. ठीक है, It will ठीक be है मैम. also good learning for all of us, and it will be nice. We'll understand it. Step by Yeah. step. ठीक है. Perfect. We do तो that. नेक्स्ट वाला सेशन ऑलरेडी सेट हो गया है, उसका डेट मैं आपको भेज दूंगी. ठीक है. मैम मैं टाइम क्या है, ये टाइम है. सेशन It will be only in February. अभी तो फुल है. We are all जी. full with speakers. Shivani? जी मैम आई हैव अ सजेशन. कुलभूषण, एक सबका मेन तत्व क्या है, इसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं सबको जानने में कि व्हाट इज माय मेन तत्व, हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग. व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. And what should I do with that? मैंने Nice. ठीक है.
कुलभूषण करेगा वो। ओके ओके, तो एक काम करेंगे, मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उसमें आप लोग उसका आंसर कर दीजिए। उसके बेसिस पे आपका तत्व कैलकुलेशन मेरी टीम कर देगी, और फिर वी कैन टॉक अबाउट ईच वन एंड लाइक ऑफ दैट, राइट? उसको करेंगे। एक्चुअली क्या है कि तत्व से आयुर्वेद में भी आपका, जैसे मैं बताता हूँ, पुरुष और प्रकृति है। जैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, तो पुरुष तत्व के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं और कुछ शक्ति पार्ट के बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या वो शक्ति से डिनोटेड है, तो क्या ईड़ा नाड़ी को चलाना पड़ेगा? ये मतलब जैसे मैडम ने बोला कि ये बहुत वास्ट है, तो अगर हम चलते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें करने के लिए। तो वी कैन लुक एट इट, एंड उसमें हाथों में कुछ कलर कराते हैं, टिप्स में कलर कराते हैं। जैसे होता है ना कि यहाँ पे आप तत्व देखते हैं, पंच तत्वों को, तो उसके बेसिस पे कलर थेरेपी करके, घर पे कलर थेरेपी करके उन तत्वों को बैलेंस कर देते हैं। तो ये चीजें हैं विदाउट, अच्छा मेरा वास्तु में विदाउट ब्रेकिंग द प्लेस। अब अगर कोई सोचे मैंने नया नया इतना बढ़िया आलीशान बंगलो बनाया है और ये वास्तु शास्त्री आएंगे और कहेंगे बुलडोज करो भाई, ये तोड़ो वो तोड़ो, वो नहीं करते हैं। हम केवल क्या करते हैं कि एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है, और पर्टिकुलर कलर एमिट करती है। तो अगर वो कलर वहां पे वो हमें सूट नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसी एनर्जी को वहां क्रिएट कर दें जिसका कलर ऐसा का हो जो हमें सूट कर रही हो फिर एनर्जी, तो हम कलर चेंज करके उस एनर्जी को क्रिएट, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो इस तरह से है। तो हम बहुत सारी चीजें आपस में बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा। वील टॉक अबाउट ऑल दिस। Yes, beautiful, beautiful, perfect. So thank you so much, everybody, for being present here as always. The group Thank you, ma'am. was Thank you, everyone. enthusiastic. Thank you, ma'am. So thank you, Kulbhushan. It was wonderful.